हेलो फ्रेंड्स, आज बात कर लेते हैं अपन हिस्ट्री की। ओके, जो नाबार्ड हो या फिर आरआरबी एएलपी के एग्जाम्स हो या एनआईसीएल की सेकंड एग्जाम है, उसमें ये सारे क्वेश्चन कवर होंगे। ओके, तो आज अपन हिस्ट्री के बारे में देख लेते हैं। हिस्ट्री के 3 पेपर्स अपन लेंगे, जिसमें हर इसमें 50-50 क्वेश्चंस रहेंगे। एंड देन उसके बाद इंपॉर्टेंट प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस अपन लेने वाले हैं। ओके, उसकी मैं डेट आपको बता दूंगा, टाइम भी बता दूंगा कि कौन से डेट पे और कौन से टाइम पे अपन पोस्ट करेंगे वो सारे पेपर। वो मैं आपको टेबल्स पूरा फुल फॉर्मेट में दे दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो, ताकि मुझे भी कुछ मोटिवेट मिल जाए। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ फीचर ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन। तो इनडायरेक्टली हड़प्पा सिविलाइजेशन का कौन सा फीचर नहीं है, तो वो है कास्ट सिस्टम। ओके, कास्ट सिस्टम जो है हड़प्पा सिस्टम में नहीं थे। ओके, यहाँ पे देखो एक्सप्लेनेशन में मैंने बताया है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन डिड नॉट हैव क्लियरली डिफाइंड कास्ट सिस्टम विच emerged later in Indian history. Okay, next, second है, who was the founder of मौर्य एम्पायर। तो मौर्य एम्पायर का जो फाउंडर है वो है चंद्रगुप्त मौर्य। ओके, चंद्रगुप्त मौर्य ने 332 बीसी बीकेड में अपन ने, ओके, विद द हेल्प ऑफ चाणक्य ने वो एम्पायर उसने डेवलप किया था। ओके, नेक्स्ट, थर्ड है, द एडिक्ट ऑफ अशोका वेयर प्रिलिमिनरी प्राइमरी कंसर्न विच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, तो यहाँ पे जो है वो है मोरल एंड इथिक गवर्नमेंट। जो चंद्रगुप्त मौर्य अशोका है, सॉरी चंद्रगुप्त मौर्य नहीं अशोका है। ओके, अशोका क्या है, इट इज अ प्रिलिमिनरी कंसर्न जो है वो मोरल एंड इथिकल गवर्नमेंट। देखो, द एडिक्ट ऑफ अशोका फोकस ऑन इथिकल गवर्नेंस प्रोमोटिंग नॉन वायलेंस एंड धर्म। ओके, मीन्स राइट हाउसनेस। ओके, नेक्स्ट, फोर्थ, द टर्म सत्याग्रह। Okay, the term satyagraha was first used which leader in Indian independence movement? तो वो है महात्मा गांधी। ओके, महात्मा गांधी coined the term satyagraha to describe his philosophy of non-violent resistance. Okay, नेक्स्ट है फिफ्थ में बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू बी फॉर्म ऑन लिगिस्टिक बेसिक। तो वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो है वो सबसे 1953 में लिगिस्टिक लाइन बिकमिंग द फर्स्ट स्टेट टू शो इंडिपेंडेंस इंडिया। ओके, नेक्स्ट, सिक्स, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज एसोसिएट विद द स्वदेशी मूवमेंट। तो स्वदेशी मूवमेंट जो है बिपिन चंद्रपाल। ओके, तो बिपिन चंद्रपाल वाज वन ऑफ द प्रोमिनेंट लीडर of the Swadeshi movement, which aimed to promote Indian goods and boycott British product. Okay, next, 7, the famous Dandi March was undertaken to protest against which of the following? तो वो है British salt monopoly. Okay, देखो दांडी मार्च जो है वो 1930 was non violent protest against the British salt monopoly and soil. Okay, next, 8, अब यहाँ पे बोला है 8 में, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट वन ऑफ द 4 मेजर स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसॉफी। तो वो है कन्फ्यूजियज्म। ओके, कन्फ्यूशियनिज्म जो है वो चाइनीज फिलोसॉफी है, वाइल मीमांसा, नाया एंड सामख्य आर इंडियन फिलोसॉफिकल स्कूल। ओके, नेक्स्ट, 9th, the revolt of 1857 is often referred to as the first war of independence. Which of the following was the major cause of the revolt? तो इसका आंसर है लैंड रेवेन्यू पॉलिसी। तो लैंड रेवेन्यू पॉलिसी देखो, डिसकंटेंट एंड ऑप्रेसिव लैंड रेवेन्यू पॉलिसी कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द रिवॉल्ट ऑफ 1857। ओके, 10th, which of the following was a significant impact on British Raj on Indian agriculture? तो वो है decrease agriculture production। तो देखो, British Raj often priorities cash crop over the food crop, leading to decreased food security and agriculture production. Okay, next, 11, the Rigveda, one of the oldest texts in Indian literature, primarily consists of, ओके, तो प्राइमरी कंसिस्ट ऑफ क्या है, हाइम्स एंड प्रेयर्स। ओके, देखो, द ऋग्वेदा इज प्राइमरी कलेक्शन ऑफ हाइम्स एंड प्रेयर्स ऑफ द वेरियस डाइटीज। ओके, नेक्स्ट, 12th, which Mughal empire is known as the establishment of scientific religion called as a Din-i-Ilahi? Okay, Din-i-Ilahi, तो ये है अकबर।
ओके, देखो अकबर एस्टेब्लिश दीन इलाही इन द अटेम्प्ट ऑफ रिकंसाइल डिफरेंट रिलीजन एंड प्रमोट यूनिटी. ओके, नेक्स्ट 13. द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फाउंडेड इन विच ईयर? तो वह है 1885. ओके, देखो इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फाउंडेड इन 1885, इनिशियली एम at obtaining greater share in the government for educated Indians. Okay, next 14. Who was the author of the book हिंद स्वराज? तो वो है महात्मा गांधी. ओके, देखो हिंद स्वराज इज अ बुक रिटन बाय महात्मा गांधी इन 1999, outlining his philosophy of self rule and non violence. Okay, next 15. Which movement was launched by Mahatma Gandhi in response to the Raw Act? देखो रॉल एक्ट जो है वो है नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट. ओके, देखो द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट वाज लॉन्च इन 1920 टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ऑप्रेसिव रॉल एक्ट. ओके, नेक्स्ट 16. The Gupta period is often referred to as the golden age of India due to advancement which one of the following? तो वो है art and literature. Okay, देखो the Gupta period is known for the significant advancement in art, literature and science, including work of Kalidasa and Aryabhatta. Okay, next 17. अब यहाँ पे बोला which of the following king is known for his contribution to architecture during the Gupta period? ओके, तो वो है चंद्रगुप्ता टू. कौन है? चंद्रगुप्ता टू. द चंद्रगुप्ता टू इज नोन फॉर हिज पैट्रॉन्स ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर इंक्लूडिंग फेमस रॉक कट केव्स एट अजंता. ओके, नेक्स्ट 18. Which of the following statement about the Harappa civilization is true? तो ये लास्ट वाला जो है इट हैज अ वेल प्लान ड्रेनेज सिस्टम. ओके, देखो द हरप्पा सिविलाइजेशन इज रिनोव्ड फॉर इट एडवांस अर्बन प्लानिंग इंक्लूडिंग सोफिस्टिकेटेड ड्रेनेज सिस्टम. ओके, नेक्स्ट 19. द भक्ति मूवमेंट इन इंडिया प्राइमरी एम्फासाइज, तो वो है पर्सनल डिवोशन टुवर्ड डाइटी. देखो द भक्ति मूवमेंट promoted personal devotion and love for the personal god, transcending caste and ritualistic practice. Okay, next 20. Which of the following was the last Mughal empire? तो वो है बहादुर शाह. Okay, देखो बहादुर शाह also known as a Bahadur Shah Zafar was the last Mughal empire deposed after the revolt 1857. Okay, next 21. Which of the following was the direct consequence of the partition of Bengal in 1905? Okay, तो देखो 1905 में जो है फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग. ओके, द पार्टीशन ऑफ बंगाल लीड टू इंक्रीज कम्युनल टेंशन एंड फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इन 1906. ओके, नेक्स्ट 22. Who was known as the frontier Gandhi for his effort in promoting non-violence among the tribal people of the Northwest Frontier Provinces? तो उसका आंसर है खान अब्दुल गाफर खान. ओके, देखो खान अब्दुल गाफर खान, क्लोज एसोसिएट ऑफ गांधी, promoted non-violence and social reform among the Pashto tribes. Okay, next 23. Which of the following act lead to establishment of the Government of Indian Act 1935? तो वो है मोन्टागू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म. ओके, देखो मोन्टागू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म provided the framework for the Government of India in 1935, which aimed to increase self-governance. Okay, next 24. The famous movement Ajanta Cave, ओके, इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? तो वो है महाराष्ट्र. ओके, द अजंता केव नोन फॉर देयर बुद्धिस्ट रॉक और इज देयर बुद्धिस्ट रॉक कट स्कल्पचर एंड पेंटिंग आर लोकेटेड इन महाराष्ट्र. ओके, नेक्स्ट 25. द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी इन विच ईयर? तो वो है
1930. देखो, the civil disobedience movement was launched in 1930 to oppose British law and encourage Indian to defy them non-violently. Next है 26. Which of the following was main aim of चंपारण सत्याग्रह lead by गांधी? तो वो है to improve condition of indigo planter. Okay, देखो, the चंपारण सत्याग्रह in 1917 was aimed at improving the plight indigo farmer in Bihar. Okay, next 27. Which Indian ruler is known for his rock edict promoting Buddhism? तो वो है अशोका. The Emperor Ashoka is known for his rock edict that promoted Buddhist principle and moral governance. Next at 28. The Jallianwala Bagh March occurred in which year? तो वो है 1919. देखो, the Jallianwala Bagh March occurred on April 13, 1919, when British troops opened fire a peaceful gathering. Okay. Next 29. Who among the following was not a member of first round table conference? तो वो है सुभाष चंद्र बोस. देखो, सुभाष चंद्र बोस was not a member of India of the first round table conference which took place in 1930-32. Next 30. The term Swaraj refers to means self rule. Okay, देखो, the Swaraj means self rule was a central concept in Indian independence movement, particularly advocated by Gandhi. Next 31. Which of the following statement about the Rig Veda is true? तो वो है it contain hymns dedicated to the various deities. देखो, the Rig Veda is a collection of hymns dedicated to various deities composed during the early Vedic period. Next 32. The Swaraj Party was founded by which of the following leaders? तो वो है CR Das and Motilal Nehru. देखो, the Swaraj Party was founded in 1923 by CR Das and Motilal Nehru to enter legislative council and promote self rule. Next 33. Which of the following was the main purpose of Quit India movement? तो वो है to demand immediate independence. देखो, the Quit India movement launched in 1942 demanded immediate independence from the British rule. Next है 34. The first Indian to become a member of British Parliament was, तो वो है दादा भाई नवरोजी. देखो, दादा भाई नवरोजी become the first Indian to be elected to the British Parliament in 1892. Next 35. Which of the following is a feature of Gupta Empire? तो C. Third, flourishing of art and science. देखो, Gupta Empire is known for its culture flourishing, particularly in art, literature, and science. Okay. Next, 36. The Battle of Plassey was fought in which year? तो वो है 1757. देखो, the Battle of Plassey was fought in 1757 and marked the beginning of British dominance in India. Next, 37. Which Mughal empire is known for his architecture contribution including the Taj Mahal? तो वो है शाहजहां. देखो, शाहजहां commissioned the Taj Mahal in the memory of his wife Mumtaz Mahal along with the several other architecture marvels. Next, 38. The term non-corporation in the Indian independence movement refers to boycott of British goods and renunciation of title and honors. Okay, देखो, the non-corporation movement involved boycotting British goods and institution as well as renouncing title and honors. Next, 39. The Mopa rebellion of 1921 occurred in which region of India? तो वो है केरला. देखो, the Mopa rebellion was a pleasant uprising in the Malabar region of Kerala against the British rule and feudal oppression. Okay. Next, 40. Which of the following act was enacted to the curb the activity of Indian National Congress? तो वो है Rowlatt Act. Okay. देखो, Rowlatt Act 1999 allows the British government to arrest and imprison
Indian without trial aiming to suppress nationalist activity. Okay, next 41. Who wrote the famous book Discovery of India? तो वो है जवाहरलाल नेहरू. देखो, the Jawaharlal Nehru of sorry, the Discovery of India was written by Jawaharlal Nehru during his imprisonment in 1942-1946. Okay. Next है 42. Which of the following movement aim to address the grievance of the oppressed classes in India? तो वो है backward classes movement. देखो, the backward classes movement sought to address the social and economic grievance of oppressed classes in India. Next 43. The Dandi March was important event in which year of Indian independence movement? वो है 1930. The Dandi March took place 1930, protest against the British salt tax. Okay. Next 44. Which of the following Indian leader was prominent advocates of women right issue? तो वो है सरोजिनी नायडू. देखो, सरोजिनी नायडू was an advocate for the women's right and played a significant role in Indian independence movement. Next 45. Which dynasty is known for its establishment of a strong navy and maritime trade in ancient India? तो वो है चोला. The Chola dynasty is known for its powerful navy and extensive maritime trade in Southeast Asia. Okay. Next 46. The Khilafat movement was primary aim at. The Khilafat movement मतलब protecting the caliphate after the World War I. देखो, the Khilafat movement aimed to protect Ottoman Caliphate of the following defeat World War I was led by Indian Muslim. Next 47. The first president of Indian National Congress was, तो वो है W.C. Banerjee. Okay, देखो, W.C. Banerjee was the first president of India of the Indian National Congress elected in 1885. Next 48. Which of the following is considered father of the Indian Constitution? तो वो है Dr. B.R. Ambedkar. Dr. B.R. Ambedkar is regarded as a father of Indian Constitution for his pivotal role in drafting it. Okay. Next 49. Which of the following movement was associated with the fight against British salt monopoly? तो वो है Dandi March. Dandi March was directed action led by Gandhi in 1930 against the British salt monopoly. Next 50. The concept of Bhudan was popularized by which leader? तो वो है विनोबा भावे. देखो, विनोबा भावे popularized the Bhudan movement, encouraging landowner to donate land to the landless. Okay. नेक्स्ट जो रहेगा वो हिस्ट्री का ही सेकंड रहेगा. उसके बाद अपन इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पोस्ट करेंगे. तब तक के लिए जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो ताकि भी मुझे मोटिवेशन मिल जाए. थैंक यू.